हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे मेरी वीडियो एंजॉय करो। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 फ्रूट सैलेड। सबसे पहले हम करेंगे टिक और क्रॉस या फिर राइट और रॉन्ग। लेट्स स्टार्ट। आई ईट अ मैंगो आफ्टर डिनर। नो, क्रॉस। सेकंड, डैड gave me another orange. Yes, tick. The grapes are in a bowl. Yes, tick. There are 3 apples. Yes, tick. There are bananas in my pocket. No, wrong, cross. Now we will do question answers. Let's start with question number 1. What do I put in my milkshake? The answer is I put milk, honey and peaches in my milkshake. How many cherries do I eat every morning? I eat 8 cherries every morning. Who ate 4 of the grapes? Brother ate 4 of the grapes. Where are the pears? The pears are in the shopping bag. What am I making with all the fruits? I am making fruit salad with all the fruits. Now we will do write the names of fruits correctly. यहाँ पे स्पेलिंग दी हुए हैं गलत गुआवा की। The correct spelling of guava is G-U-A-V-A. Now pear, correct spelling of pear is P-E-A-R, pear. Now apple, A-double-P-L-E, apple. Mango, M-A-N-G-O, mango. Orange, O-R-A-N-G-E, orange. Banana, B-A-N-A-N-A, banana. Now we will do match and make a single word. Pineapple, watermelon, strawberry, sunflower, matchbox, overtake. थैंक यू बच्चों। जल्दी जल्दी जाके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।